अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। फिर से मैं आप लोग के बीच में आ गया हूँ लाइक। फिर मैं सुबह सुबह फिर डेली के जैसा बाइबल पढ़ता हूँ। इस समय पढ़ने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले छोटा प्रार्थना करता हूँ। हे महान स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर लखन वादे का अपना बटा दिन वर्ष चित्र के हमारे केवल चंद्र श्वास रखा पिता परमेश्वर हमारे संग साथ आशीष दिए हम के अपना चंद्र श्वास रखा वादे पिता परमेश्वर और यहाँ तक पहुँचा कर वादे दिन वर्ष चित्र के हमारे संग हमारे संग साथ पिता परमेश्वर जो कुछ पढ़ेंगे बाइबल से अपना हमारे सके जीवन में इस्तेमाल परिवार संग साथ माता जी के संग साथ बालों के संग साथ पिता हर ईश्वर से बड़ी वचन से आचरण का कसम पर पापी भी नजर पड़ते पिता हम अपना पद कुछ नहीं क्या सब कुछ जानते पिता हमारे जीवन में तो आपकी चलते हैं आपके परिवार का कर सकते हैं चलो प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ ताकि समय सुनने का आमीन। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ है परमेश्वर के दया से बहुत चंगा स्वास्थ्य है। परमेश्वर ने सबका सलामत रखा होगा। परमेश्वर सबको आशीष देता है, वो दयालु है। दया करने परमेश्वर हम लोग को हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहना है और परमेश्वर से बातें करना है। कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हम सबका सुनता है और भले ही आपके इच्छा अनुसार जल्दी जल्दी आंसर ना देता हो, लेकिन लेट से ही सही, लेकिन सही समय ही देता है। चलिए फिर से मैं अपना बाइबल खोलता हूँ। लूक का चैप्टर 22 पढ़ रहा था। कल मैंने आधा पढ़ा, बहुत नहीं लंबा है। That's why I have divided two part or Luke chapter 2 because it is so long. Verse content here 1 to 71, so ये बहुत ही लंबा है। That's why I have to divide two parts. So I have already divided. So yesterday I started from 1 to 38. मैंने 1 से लेकर 38 तक पढ़ा। So अभी मैं 39 से फिर से स्टार्ट करूँगा। चलिए। So they said, Lord, look, here are two words. And he said to them, It is enough. The prayer in the garden. Come out. He went to the Mount of Olives as he was custom, and his disciples also followed him. When he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he was withdrawn from them about a stone thrown, and he kneeled down and prayed, saying, Father, if it is will, take your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, not my will, but your be done. Then an angel appears to him from heaven, strengthening him, and and being in agony, he prayed more earnestly than his sweat, because like great drop of blood falling down to the ground. When he rose up from prayer, he had come to his disciples and found them sleeping from sorrow. Then he said to them, Why did you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. Betrayal and arrest in Gethsemane. And while he was still speaking, behold, a multitude, and
And he who was called Judah, one of the 12, went before them and drew near to Jesus to kiss him. But Jesus said to him, Judah, are you betraying the Son of Man with a kiss? When those around him saw what was going to happen, they said to him, Lord, shall we strike with the words? And one of them struck the swords of the high priest and cut off his right ear. But Jesus answered and said, Permit even this. And he touched his ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests, captain of the temple, and the elders who had come to him, have you come out as against a robber with swords and club? When I was with you daily in the temple, and you did not try to seize me, but this is your hour and the power of darkness. The Peter, the Peter denied Jesus and wept bitterly. Having arrested him, they led him and brought him into the high priest's house. But Peter followed at a distance. Now, when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Okay. And a certain servant girl seeing him as he sat by the fire looked in intently, intently at him and said, This man was also with him. But he denied him, saying, Woman, I did not know him. And after a little while another saw him and said, You also are of them. But Peter said, Man, I am not. Then after about an hour had passed, another confidently alms, saying, Surely this fellow also was with him, for a for he is a Galilean. You are saying. Immediately while he was still speaking, the rooster crowed. After the Lord turned and looked at Peter, then Peter remembered the words of the Lord, who he had said to him, Before the rooster crow, you will deny me 3 times. So Peter went out and wept bitterly. Jesus mocked and beaten. Now the man who healed had Jesus mock him and beat him, and having blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy, who is the one who struck you? And many other things they blasphemously spoke against him. Jesus faced the Sanhedrin. As soon as it was day, the elders of the peoples, both chief priests and scribes, come together and led him into the council, saying, If you are the Christ, tell us. But he said to them, If I tell you, you will by no means believe. And if I also ask you, you will by no means answer me or let me go. Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. Then they all said, Are you then the Son of God? So he said to them, You rightly answered that I am. And they said, What further testimony do we need? For we have heard it ourselves from his own mouth. Amen. So I have completed 12
Luke chapter 22, verse 1 to 71. It is so long. So yesterday, yesterday night I studied half and now I have full. तो मैंने कंप्लीट किया 1 से लेकर 71, तो बाद में पढ़ूँगा 23। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोगों ने ज्वाइन किया मेरा लाइफ में। परमेश्वर सबको आशीष दे, कि परमेश्वर सबको दया करता है, मदद करता है। जैसे हम लोग को याद करना है, हम लोग को प्रे करना है, क्या कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग साथ रहता है। चाहे हम लोग भूल जाएं, हम लोग बिखर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे संग साथ रहता है और कभी नहीं छोड़ने वाला है। क्या है कि परमेश्वर ने हम लोग को चुना है, हम लोग के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। सो चलिए मैं छोटा प्रार्थना करूँगा यहीं से। हे महान स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, लखन वाली थी अपने बेटा अद्भुत सुरक्षित रखे, मदद करना चाहिए। स्वास्थ्य रखे पिता परमेश्वर, सुंदर दिन देखने का मौका दिया, दिन भर सुरक्षित रखना, मदद करना, बोला चाहिए। स्वास्थ्य रखना पिता परमेश्वर, आशीष देना, बोला चाहिए। स्वास्थ्य रखना, जो कुछ पढ़े बाइबल से अपने हमें उदाहरण से जीवन में इस्तेमाल कर सके। और इस परिचित लोग सभी के संग साथ में, जहाँ के रिश्तेदार सभी के संग साथ में, और चर्च के प्रत्येक वर्ग के संग साथ में पिता परमेश्वर। पिता हम बुद्धि ज्ञान की कमी घटी, पिता हम बुद्धि ज्ञान देने पिता परमेश्वर। पिता जितने को भी लाए आए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के संग साथ में आशीष देना, मदद करना पिता। उसका घर परिवार में होना है, अगर दुख तकलीफ में है पिता, उसे दूर करना पिता। आज ये शुरुआत के दिन 2025 के बाद 26 चल रहा है पिता। इस 26 में ये पहली मंथ है, तो सबके संग साथ में मदद करना पिता। हम सब पापी गुनाहगार अपराधी हैं पिता। हर एक पर, हर एक क्षण, हर एक पल पाप गुनाह अपराध करते रहते पिता परमेश्वर। हमारे पाप गुनाह अपराध को क्षमा करना पिता परमेश्वर। आपके चरणों तले आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पाप गुनाह अपराध को क्षमा करना, कि हम सब कुछ जानते हैं। हमारे परिवार के संग साथ में, माता जी संग साथ है, दोनों बहनों के संग साथ में आशीष देना, मदद करना। जो भी काम काज कर रहे हैं पिता, उसमें आशीष देना, स्वास्थ्य रखना, दुख तकलीफ में बचा रखना। हर एक सौ से बड़े वचन में चाल चलन में, काम काज में, हर प्राचीन पापी गुनाहगार पाप गुनाह अपराध को क्षमा करना, कि हम हमने सब कुछ जानते हैं। ये छुट्टी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, ताकि समय सुनर ग्रहण करा। आमीन। ये है पिता स्वर्गमय का पवित्र नजर आज करती का प्रभु, हमारे दिन भर को दी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, अब भी हमारे तो को क्षमा पर चलना ना कर तो बड़ी बचा, क्योंकि राजा प्रभु की महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। थैंक यू। आप लोगों ने जुड़ा, वैसे ही परमेश्वर सबको आशीष दे और आपका परिवार खुशहाल रहे। आमीन। सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू।